Good evening and welcome. You're watching Breaking Views with me, Sanket Upadhyay, the only show where we get you all the views so that you get the complete picture. One big story that dominated the headlines, you would say that I would talk about inflation. Well, no. In the Indian media, it is not inflation, but a conversation around Mandir, Masjid, Minar, Mahal, and yes, you can accuse us of engaging in the same debate. Because what we are attempting to do over here is while we debate Mandir, Masjid, Minar, Mahal, we are questioning another M called motive. What exactly could be the political motive behind this? Because there was great amount of, not just Gyanvapi, but you look at various other cases also where many BJP leaders were going and petitioning in courts. What can be the motive to keep raising these issues and digging up the past? Also on the show, the two Gyanvapi lawyers who argued this case in the court argue their case again on NDTV. They present their arguments passionately. Unfortunately for them, it's only us or the people who are watching the show who will be listening. They can decide in their mind, but this is not a court of law. So they place their arguments. You can choose which side has a more convincing view. Let's quickly kickstart this debate. Before we do that, remember, we questioned the motive. What could really be the motive? Eventually, what will happen? I mean, if you want to undertake this as an academic exercise where you want to know whether this was a mosque or a temple, fine. That's curiosity. One must find history. Keep digging to find history. But if the intention or the motive is to make sure that the place of worship changes from one religion to the other, that cannot happen. The Gyanvapi Rao, is this an academic exercise or an attempt to do an Ayodhya? You see, there is a Places of Worship Act 1991 which prohibits this conversion. You can't do it even if a court today decides that no, this was not a mosque, it was a temple. You can't change its constitution. Because this act prohibits the conversion of places of worship. This was brought in by the Narasimha Rao government in 1991. The law prohibits religious places. They cannot be, their character cannot be changed, particularly as they were since independence. This law excludes Ayodhya because that was a pre-independence title dispute. Remember, the BJP had opposed this Places of Worship Act in 1991 as well. And I would also like to quickly add, let's see if we can put those graphics on screen or not, what the Supreme Court said in its Ayodhya judgment. I believe that's the fourth graphic in our set. What did the Supreme Court say? The Supreme Court said that the government's solemn duty and basic structure doctrine, the Supreme Court underscored the objective of the 1991 Act. It said that historical wrongs cannot be remedied by people taking law in their own hands. Places of Worship Act is a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of secular values. Preserve and protect equality of all faiths as an essential constitutional value. These are the words of the Supreme Court while delivering the Ayodhya judgment in November 2019, in a way upholding the Places of Worship Act 1991. So then we ask once again, what really is the political motive? Let's kickstart that political debate. Charan Singh Sapra, spokesperson of the Congress Party, is with us. We also have Professor Bhuvan Joshi Bhaskar of the Samajwadi Party, Mahesh Verma, leader of the BJP, and Raghav Avasthi, lawyer and RSS supporter. Thank you very much, all of you, for joining us. Mahesh Verma, I want to begin with you first. सवाल है, मंदिर, मस्जिद, महल, मीनार, ये जितने म आप कर लीजिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण म है और वो है मंशा, motive. What is the motive? Because I hope you realize there is a Places of Worship Act. इसको आप मंदिर नहीं बना सकते. यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर कोर्ट की मंशा पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है इस देश में. कोर्ट कोई ऐसी तो है नहीं कि भाजपा की कोई सल्तनत है, ये राज है या रूल कर रहा है कोर्ट के ऊपर भाजपा वहां पे, और कोर्ट कानून से चलता है इस देश में. संकेत जी,
और वहां मसला ये नहीं है कि कोई कोर्ट, जैसे आपने अभी अपनी शुरुआती रिमार्क्स में जो बातें आपने रखी उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो है कोई फैसला आने जा रहा है जैसे अयोध्या का हुआ था। और याद करिए कि अयोध्या में किसने इस चीज की शुरुआत करी थी? संत हरिदास, जो जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने एप्लीकेशन डाला कि इसके ताले खोले जाए। 1951 की बात है। जीबी पंत साहब ने उसका घनघोर विरोध किया था। तो आप ये सब चीज, ये आईना उनको दिखाइए जिनकी आईना बिल्कुल दिखाया जाएगा और छात्रा जी से भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे वर्मा जी से इतना है, अगर आप पूछिए कि ये सिर्फ ज्ञानवापी तक सीमित नहीं है। क्या है? दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू ज्ञानवापी। दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ज्ञानवापी। अब आपके बीजेपी के नेता हैं, वो पेटिशनर थे जो कि लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने बोला मुझे ताले खोल के दिखाइए साहब कि ताजमहल के अंदर क्या है। व्हाट डिड द कोर्ट टेल यू? What did the court tell that BJP leader? Go and study in a university. Don't waste the court's time. मस्जिद के नाम पर इस देश में एक नफरत और दहशत अगर पैदा किया जाए, कोर्ट के मंसाई के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जाए, कौन उठा रहा है? देश में बचा क्या? धर्म के नाम पर ऐसा तांडव इस देश में कब तक चलेगा? किस तरह की नसीहत दी जाती है? ये किस तरह से लोगों को चुनौतियां दी जा रही है? ये संविधान और my question is very simple. Raghav Awasthi, I want to go to Raghav, please. Very short duration discussion. Mr. Raghav, I want to ask you this simple question. If this is a purely academic exercise, it's very good. I mean, nobody in his right mind can say that we do not want to explore our history. If there is something, it must be explored. That academic exercise must happen in a country. You can't shut it and say that we will not have an academic exercise. But it's the motive. And number two, what do you want to do with it? Is an intention to redo an Ayodhya? Because that the law very clearly states cannot happen. The Supreme Court in November 2019 said not happening. There are two aspects, right? First theme that you touched upon was in relation to the act. So as it happens, I am a lawyer by profession. Yes, sir. And I actually have read the Act threadbare. The Act is very clear. Section 4 is, of course, the provision which says what you say it says. But below that, there is a proviso which very clearly says that if it is a place of archaeological and historical importance, then it would be excluded from the ambit of the Act. The second point that you mentioned was in relation to the observation that was made about this Places of Worship Act in the Ayodhya judgment. Again, I am a lawyer, so I know a little bit about how to read judgments. So any judgment or any observations made therein are applicable only to the facts of the case. Otherwise, they qualify as what is known as obiter, which is not binding precedent and does not even constitute the law of the land, because observations made in vacuum are, maybe it's like a judge expressing an opinion. No, Raghav, I agree. It is an observation. It's a legal point I'm making. Viewers also need to know. They also need to hear my point of view. Absolutely. So, I mean, no, you are right in saying that this is an observation. I'm saying that will that spirit of that law be respected? The Places of Worship Act. Thirdly, I see the BJP challenging the very existence of that law. The BJP opposed this law when it had come in the Narasimha Rao regime, by the way. Listen to me, Sanket ji, the constitutionality of the Places of Worship Act is also under challenge. And fourthly, the legislature has sovereign powers. The same legislature that passed this law can also repeal this law. Exactly why I ask a question on the motive. What is the motive? Do you eventually, after conducting these surveys, want these mosques to get converted into temples? I'll tell you what the motive is. The motive is that we should know our history. And I also feel that if you take the case of something like the Hagia Sophia, which has been now reconverted into a mosque, but when there was the enlightened regime of Ataturk in place, they felt that Hagia Sophia had been forcibly converted into a mosque, so it has to be converted into a cathedral. Okay. So if an exercise like this has to be done, then Karan Singh Sapra and Professor Bhaskar, one by one. Have a problem with it because we have to make a regular. Yeah, exactly. So that's my point, Mr. Raghav. As an academic exercise, bring it on. As a country, we must know. There should be a detailed study of all sorts, and we must know. But what do we plan to do with that study? Are we going to alter that religious place of worship
Because the moment you do that, and that is the motive. छोटी सी जानकारी आपके दर्शकों को दी जा सकती है? It has to be done in a legal manner. If the nature of that place has to be altered, it has to be done in a legal manner. Nothing so again, that's why I bring in the question of motive. You're saying that you're ready to explore along the lines of altering, the religious worship, the nature of that. There's nothing wrong with it. I don't think the Places of Worship Act even covers exactly why I'm debating the archaeological importance. Sanketji, listen to me. There is a proviso in section 4 which excludes places of archaeological and historical evidence from the purview of the Act. Mr. Verma, I'll come back to you. Charan Singh Sapra, your intervention. Sanket, you rightly said about the academic exercise, and you also rightly mentioned the Places of Worship Act 1991. It is not only academic exercise, but it is a political exercise by BJP. I would like to put it that way, majorly because they want to, divert the attention or deflect the attention of the people from the major issues like price rise, like inflation, like unemployment, the rising unemployment over here, and price rise especially because not only petrol, diesel, but also LPG, PNG, or maybe essential commodities like wheat, flour, rice, vegetables, even Mr. Sapra, while you mentioned that point of deflecting attention, I'm saying that even if for one moment you were to assume that this is correct and put that aside, even if this is a deflection strategy, just on the merits of what is happening, will you think that there is some political motive behind it? Like Mr. Awasthi says, so what? If the constitution, religious constitution of a place has to change, that should happen by law, which means he does explore the idea. Motive also. Let me come to the political motive. One political motive, I said that they want to deflect the attention of the entire country from the mistakes they have done. Another political motive is that there are elections from November 22 up to the next year, like December 23. There are elections in 7 states, right? Starting from Gujarat, then Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan. So you're saying this is for elections? So they want to polarize. They want to polarize the entire polarizing bid ahead of elections. Mahesh Verma, very quickly. मुझे नहीं लगता कि ये पोलराइजेशन जो है ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो ऐसे हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, ये कह सकते हैं कि ये पोलराइजेशन का सवाल वो नहीं है संकेत जी। ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है और इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है और आपके दर्शकों को ये जानना और बताना बहुत जरूरी है कि ये जो मुद्दा है, कोर्ट ने जो सर्वे करने का या वीडियोग्राफी करने की बात कही है, वहां गौरी सिंगार चबूतरा था, उसको लेकर वहां एक महिला गई, दुकानदार थी, जो वहां पूजा पाठ जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके फिर वहां जाते थे, उसने कहा कि उस चबूतरे को जो है सुरक्षा की दृष्टि से उसमें कवर कर लिया गया है। ये उसके लिए आदेश दिया गया है। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि कांग्रेस और तमाम लंबरदार और सारे लोग मुस्लिम जमात के लिए हाय मुसलमानों का यहाँ पे जो है अब फिर से जो है एक ज्ञानवापी मस्जिद पे चढ़ाई बीजेपी कर रही है, मथुरा पे भी इसी तरह से चढ़ाई। मिस्टर सापरा's response, आतंक और दहशत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ और उसके ऊपर ये कहा जाए कि महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। ये क्या मतलब है? ये कौन से लोग हैं किस देश में रहते हैं जहाँ पे इतनी सी बात को लेकर one by one please, one by one, Mr. Verma please, one by one. Can I please? Yes. I am not quoting only Gyanvapi Mandir. I am also talking about the issues like hijab, halal, loudspeakers, Qutub Minar, naming the roads in Delhi which are named after the Mughal Badshah. There are so many things which they have been collectively taking just because they want to vitiate the atmosphere in the country. Okay, one moment. Professor Bhaskar has not spoken. I want to bring in Professor Bhuvan Joshi Bhaskar. Professor Bhaskar, as a political stakeholder in Uttar Pradesh, there are 3 court battles. One obviously rejected, and the petitioner, who's a BJP leader by the way, in the Taj Mahal case, has been told to go read up, go to a university, maybe do a PhD and have a drawing room conversation on this, not a legal conversation. But in the other cases, the courts have said to expedite the matter. On the 17th of May, we will know the survey will be complete in Varanasi, and in 4 months, a court has been told to quickly finish all the cases or dispose of all the cases as far as Mathura is concerned. Politically speaking, do you feel that there is a motive behind this? Or should this be seen purely as a legal exercise which is happening in this country?
legal/academic? देखिए साकेत जी, हम निश्चित तौर पे कहना चाहेंगे, जब से योगी 2.0 की सरकार आई है, इस तरह के जो आप देख रहे हैं मंदिर, मस्जिद, मीनार और महल, इस तरह के एक बार से एपिसोड क्या है, मैं तो उनको एपिसोड कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो एपिसोड है, ये सारे जो प्रायोजक है या प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, इसकी भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए इसके पीछे मंशा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे आपने देखा होगा कि परीक्षाएं लीक हो रही है, शिक्षा माफिया वहां पर हावी है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं वहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जिनको रेप और अपराध को रोकने की वहां पर काम दिया गया था, वही लोग इस काम में लग गए, पुलिस लग गई है इस काम में। तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश की महान जनता इस बात को समझ रही है कि केवल बेरोजगारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है, और जो प्रशासन की जो कमियां हैं, उनसे Mr. Awasthi wants to come in. Yes, Mr. Awasthi. Just a short response, sir. भुवन जोशी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ बस आपसे, अभी 2 महीने पहले ही चुनाव हुआ है, अगर जनता को ये लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई और ये जितनी समस्याएं हैं, तो उसपे अगर समाजवादी पार्टी पे उनका विश्वास होता है कि ये बेहतर काम कर सकते हो, तो उनको वोट दे देते। तो वोट तो नहीं दिया, तो वोट अगर नहीं दिया तो फिर अब ये कहना है कि जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। जनता का ध्यान नहीं भटका है, जनता अपने दिमाग में जो है, मन में बिल्कुल जो है साफ है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम अगर में भी जो है 100 में से 60 है, तो समाजवादी पार्टी से तो उतना भी नहीं होगा। तो फिर ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कोई कि उसको जो है ऐसे डिस्ट्रैक्शन और जो है उसका ध्यान बटा दिया जाए। जनता का ध्यान बटाना जो है आसान नहीं है, और जनता को पता है कौन क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। Raghav, when we started this debate, there was a reason why I brought in the argument about Places of Worship Act 1991, because frankly, the end to this conversation is that if you find that something was not what it is. The Places of Worship Act applies, Sanket ji. With the utmost respect, we go through the proviso to Section 4. The Places of Worship Act does not apply to this, and secondly, the Supreme Court's observations which were made in the Ayodhya case were not in the context of the constitutionality of the Places of Worship Act, so they are also not applicable. Okay. So we cannot, pick and choose whatever this section says or that judgment says out of context. This is not how the law works. I have also fought some cases, so I know. We cannot do that. I don't know, because in absolute terms, the fact that the Supreme Court mentioned this, the fact that the RSS chief himself mentioned it, Raghav Awasthi, the RSS chief himself mentioned it in the backdrop of the Ayodhya judgment, that now let's not treat this as a war. There are articles written where he says, he's quoted as saying that now Kashi, Mathura and all, let's leave it. No, but then it doesn't mean that the RSS chief has said that of an individual petitioner. And we must remember, this is not a public interest litigation. This is essentially a civil suit between two parties. He never said that a private person cannot approach the court for redressal of his rights. Well, I'm going to leave this to the wisdom of the viewers to judge where does the motive lie. Given the fact that the RSS chief was quoted as saying something, that the court in November 2019, while delivering the Ayodhya verdict, said something that in 1991 a law exists in this country, and yet we sit and argue. It's for the viewers to decide what the motive is and where do they stand. Thank you very much to the 4 gentlemen right here for debating this. Let's now play out this conversation. So you had 2 lawyers who represented the Gyanvapi case in the court. The court decided. Now those 2 lawyers are debating on NDTV. Let's play out that conversation. तो अभयनाथ जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं और आप मुझे ये बताइए कि आज अदालत ने आपकी जो दलील थी उसको एक तरीके से खारिज कर दिया, जो आप ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे थे उसको खारिज कर दिया। तो क्या ये मैं मानूं कि अब आप किसी ऊंची अदालत में जाएंगे, हायर कोर्ट? नहीं, मैं ये कहूंगा कि माननीय न्यायालय ने मेरी दलीलों को खारिज नहीं किया है, मेरी दलीलों को बाईपास कर दिया है। अच्छा, मेरी दलीलों को बाईपास कर दिया है। और सबसे अहम बिंदु होता है किसी लैंड का सर्वे कमीशन कराने के लिए, एक्चुअली ये सर्वे कमीशन नहीं है बल्कि ऑर्डिनरी कमीशन है, तो लैंड का आइडेंटिफिकेशन होना मस्ट है। मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूं कि जो उनका प्लेंट केस है
खुद उसी के आधार पर उनकी लैंड जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ आइडेंटिफाइड नहीं है, डिस्क्राइब्ड नहीं है, सीमांकित नहीं है। और इस संबंध में मैंने 1999 का एक रूलिंग भी दिया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई लैंड के बारे में कोई सूट, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए अभिनाथ जी। कि अगर वो लैंड डिस्क्राइब नहीं है, उसकी बाउंड्रीज नहीं है, तो कमीशन क्या, सूट ही मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन लर्नेड कोर्ट ने इसको बाईपास कर दिया। दूसरा मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको लर्नेड लोअर कोर्ट ने आज के आदेश में बाईपास किया है, वो ये कि देखिए, एक चीजें जो होती हैं, दो चीजें लॉ में, ये लॉ का ये बेसिक सिद्धांत होता है कि वन थिंग इज हैड बीन प्लीडेड बाय ए पार्टी, देन दैट पार्टी कैन नॉट बी लेफ्ट टू गो बियॉन्ड दैट हिज ओन एडमिशन। प्लेन केस के मुताबिक उनका ये आया है कि मां सिंगार गौरी का प्लेस जो उनके द्वारा बताया जा रहा है, वह खुद उनके प्लेंट में लिखा हुआ है कि इट इज दैट द इमेज ऑफ द सिंगार गौरी इज आउटसाइड टू द वेस्टर्न वॉल ऑफ द मॉस्क। जिससे यह तय है कि खुद उन्हीं के अनुसार जो वेस्टर्न वॉल है मॉस्क की, उसके बाहरी दीवार की तरफ मां सिंगार गौरी का स्थान बताया जा रहा है। यही बात मैंने भी कहा कि मां सिंगार गौरी का जो मस्जिद है, कैंपस बैरिकेटिंग, उसके बाहर जो वो मां सिंगार गौरी की बात बताया जा रहा है, वो वहां पर वो बाहर की तरफ है। खुद स्टेट काउंसिल ने भी यही कहा है, लेकिन लर्नेड लोअर कोर्ट ने इसको पूरा एक तरह से बाईपास करते हुए ये कह दिया कि मात्र कहने से हम नहीं मानेंगे, यह कमीशन तय करेगा कि सिंगार गौरी का वह प्लेस इनसाइड द मॉस्क है या आउटसाइड द मॉस्क है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। वंस जिसने सूट फाइल किया है, जब वो खुद ये कह रहा है कि द प्लेस ऑफ द सिंगार गौरी इज आउटसाइड टू द वेस्टर्न वॉल ऑफ द मॉस्क, तो इस चीज को कोर्ट ने क्यों नहीं माना? एडवोकेट मदन मोहन, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कैसे अभिनाथ जी की बात का जवाब देंगे। उनका यह कहना है कि अगर श्रृंगार गौरी आउटसाइड द वेस्टर्न वॉल है तो फिर अंदर सर्वे कराने की क्या जरूरत है? ये आज माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में, ये सांस्कृतिक न्याय की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हिंदू पक्ष लड़ रहा है, उसका प्रथम चरण आरंभ हो गया है, वो अंजाम तक अवश्य पहुंचेगा। ये तकनीकी कारण लटकाओ भटकाओ की मुस्लिम पक्ष की नीति रही है। आदरणीय वकील साहब इस विषय पर तो दक्ष हैं और ये उनकी दक्षता के नाते ही ये कार्रवाई अवरुद्ध हुई थी। शेष कार्रवाई आज सुनिश्चित कराएगी। 8 अगस्त 2021 को जब ये पटिशन दाखिल किया गया था, उस समय भगवती सिंगार गौरी का विग्रह बैरिकेटिंग के अंदर था। अभी जो परिवर्तन हुआ है, कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है, इस नाते वो बाहर हो गई हैं। परंतु दावा नंबर 9130, उसमें संपूर्ण रकबे का हमने आग्रह किया था और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद, साथ में तहखाना, बैरिकेटिंग का अंदर का भाग, उसी से संबद्ध उस कथित मस्जिद के पार्श्व भाग में अवस्थित भगवती सिंगार गौरी, अदृश्य देवी देवताओं का उल्लेख हमने किया था। उन सभी के निमित्त हमने ये आग्रह किया। उसी पर माननीय न्यायालय ने कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को भी सुनिश्चित किया कि आप तरफ से ये ऑर्डर हो गया है, तो अब हमको 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि ये सर्वे का नतीजा क्या निकलेगा। विल यू अपील इन अ हायर कोर्ट? आगे जाएंगे या नहीं? अभी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैंने कांटेक्ट नहीं किया है और हमारे साथ इस केस में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के साथ मेरे 6 और बदर कलीग्स हैं। इन लोगों का आपस में 4 ही दिन है आपके पास, 17 मई तक तो वो फाइंडिंग आ जाएगी सर्वे की। हाँ, इसका निर्णय मैं अभी लूंगा। आदेश पढ़ने के बाद में जो लीगल रेमेडी इसकी होगी वो मैं अवेल करूंगा। मदन जी, आपका जवाब? आपने सुना अभिनाथ जी ने जो बोला है? जी, मैंने सुना सब कुछ। वो कह रहे हैं लीगल लॉ पे बोलेंगे, ये लॉ पर बोलेंगे, लॉ पर बोलेंगे, इधर नहीं, क्यों कानून की बात बोलेंगे, बोल दीजिए उनसे कानून की बात बोलने, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। मदन जी, कानून की बात नहीं, कानून की बात बोलिएगा, पूरा देश देख रहा है। हम लोग सियासी लोग नहीं है। जी, बोलिएगा जो ऑन रिकॉर्ड लॉ है। हाँ भाई, अभिनाथ जी और मदन मोहन जी, आप सियासी लोग नहीं है, आप लॉ ऑफिसर्स हैं, आप कानून की बात बोलिए। हाँ जी मदन जी। ये सम्मानित अधिवक्ता महोदय जो कुछ कह रहे हैं, ये सारी बातें न्यायालय के समक्ष रख चुके हैं।
ऐसा कोई बिंदु इन्होंने नहीं छोड़ा है, बाल की खाल तक निकाली है। आज जब न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया कि सर्वे की कार्रवाई होगी, प्रशासन तय करेगा। अब वो तकनीकी मैंने कहा है ये सही है या गलत है, उसमें ये जो मैंने कहा अभी ये सही है कि गलत है, ये बताइए यार। मत कहिए जी, जो मैंने कहा है ये सही है या गलत है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा चैनल देख रहा है। केवल ला के भाषा में बोलिए, हम सियासी लोग नहीं है। आपने भी कह दिया और माननीय न्यायालय का जो निर्णय हुआ है, आप खुद अपने दावे को नहीं पढ़े हैं मदन मोहन जी। मदन मोहन जी आप अपने खुद प्लेंट को नहीं पढ़े हैं, अपने प्लेंट को खुद पढ़ लीजिए। जो आर्डर कोर्ट का है वो सर्वमान्य है, जो 25 या 20 होगा वो जाएगा। आप अधिवक्ता हैं मदन मोहन जी, आप यू आर अच्छाई को जानता है और वो सारी बातें उसमें नहीं पढ़े हैं आप अपने दावे को। आप मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। उन कमजोरियों को, उन अच्छाइयों को दावे में इंक्लूड किया जाता है। और ये लॉ की बात बोलिए, हम लोग ये चैनल हम लोगों को एक वकील के रूप में बुलाया है। कानून की बात बोलिए, यहाँ पे कहने की कोई बात नहीं है। माननीय न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया। अभी आपने बोला कि मैं इससे बहुत न्यायालय ने डिसाइड कर दिया। मूल बात पे आइए। कोर्ट के आर्डर से हर्षित या दुखी होने का सवाल नहीं है यहाँ पर। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए, इसमें हर्ष व्यक्त करने या मिठाई बांटने की कोई बात नहीं है। अमन चैन कायम रखिए। ये एक कहानी खत्म करके आप बड़े हैं मुतमईन, भूल बैठे हैं कि आगे एक कहानी और है। चलिए, मदन मोहन यादव की लड़ाई है, हम उसके पहले चरण में आगे बढ़ रहे हैं। जी, मदन मोहन यादव और अभयनाथ यादव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लग रहा था आप लोगों ने यही अदालत बना डाली, पर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात सामने रखने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पक्ष सामने रखने के लिए।